guys, welcome back to my channel. I hope everyone is doing well and staying safe. जो भी नए हैं मेरे channel में, just let me introduce myself. I'm Vidya here. Right now I'm in Vancouver. I'm pursuing my MBA from UCW. So lastly मैंने video में ये post की थी कि how I moved, like it was just a life update that I have migrated from India to Canada, and I migrated somewhere around in December 2022. Okay, so now it's almost like 1 year for me right now staying here. So almost so just a quick update about what is going on in my current life, right? So I have completed I've completed 4 semesters. Next semester, that is the final semester, 5th semester, that is gonna start in month of Jan, that is Jan 2024, and I'll be finally graduating in 2024 March month. I'm so happy for that. Like, of course, it's been a lot. It's been a lot mentally, emotionally, physically, that I'll talk separately in a different video and some other day. But right now, as I said in the last video, that I'll make a video on how did I choose the college and what all things I did, how did I narrow down the colleges, the fees and all those things, how did I manage everything, right? So yeah, let me talk about that in detail, right? So one of my friend is a very good close friend of mine, so he referred me. It's an institution. It's a small institution which is run by an Indian immigrant. Right now he is in Canada itself, but he is helping other students also who want to come to Canada, right? So unka naam hai Gautam Kaluri. Unka offices, they have offices in Surat, in Bombay, in Chennai, everywhere, right? So I was in contact with a guy. He's the point of contact of Chennai CIP office. CIP, उनका official Instagram page भी है, Facebook page भी है. I can link it somewhere in the video itself, right? So I was in contact with them. I was introduced to this office by one of my friend, and that's how I got to know. So I didn't pay any kind of commission or fees or anything to process my application, right? Because colleges, of course, they give them this commission. I think कुछ like I'm not sure, but क्या कुछ 1 lakh rupees कुछ मिलता है एक student के पीछे, right? So you don't have to pay any fees to any of your agents. There are agents who charge you hefty, like IDP हो या फिर कुछ और भी agents हैं, they do charge from the students, but मेरा agent ने, they didn't charge any single penny from me, right? So they were the one who processed my application. So throughout the service, I really enjoyed. I didn't had any kind of lack of service issues and all, right? So so they gave me the list of the colleges, and I had to go through a couple of discussions, either on Zoom meeting or maybe on the calls I had to go through. And on my behalf, they had applied to like usually what students do is they apply for a couple of colleges or plenty of colleges, right? But in my case, I just applied to, I think, 2 colleges, and luckily in both the colleges I did not have to pay any kind of application fee. And I had applied for UCW, and I had applied for I think Trinity Western University also. But then मुझे जल्दी से जवाब UCW से आ गया था. I think the moment I applied, मुझे 2 दिन में had got the letter of application या acceptance वो आ गया था. फिर बाद में उसके 2 दिन बाद मुझे scholarship का email भी आ गया था. So I thought like somewhere like ये बहुत smooth experience था मेरे लिए. तो I thought like let's proceed with the UCW itself. But UCW finalize करने से पहले I was having this college in my mind, that is Clare College, but उसका problem ये था कि they had project management course itself, because as my background as I'm an IT employee,
सो मेरा बैकग्राउंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से मिलता जुलता है, तो आई थॉट ओके फाइन, लेट आई वांटेड टू डू समथिंग विच इज़ रेलेवेंट टू माई फील्ड, राइट. तो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चूज़ किया था एंड मैंने कर भी लिया था. एंड द रीज़न मैंने अप्लाई भी किया, नॉट मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट कुछ तो मिसकम्युनिकेशन हुआ था मेरे और वो एजेंट के बीच में. तो मेरे दिमाग में यही था कि मुझे वहाँ अप्लाई करना है. एंड देन लेटर आई रियलाइज्ड इट कि उस इनटेक के लिए, दैट मीन्स जैन 2023 इनटेक के लिए वहाँ पे वो कोर्स नहीं था. आई थिंक समवेयर फॉर मे इनटेक के लिए था एंड मुझे जैन इनटेक में जाना था. सो आई हैड टू ड्रॉप दैट ऑप्शन. तो फिर देन आई स्टार्टेड फिगरिंग आउट एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी लिस्ट ऑफ कॉलेज ऑप्शंस. एंड मेरे लिए एक्चुअली बहुत लिमिटेड ऑप्शंस था, बिकॉज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोर्स, इफ यू सी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्स, इट्स लाइक यू नो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स ही था जो कि कोनेस्टोगा में था. एंड लाइक सिंस लॉन्ग टाइम आई हैड दिस थिंग इन माइंड कि मुझे यूनिवर्सिटी से करना है, नॉट फ्रॉम कॉलेज. वेल, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट उस टाइम पे मैं इंडिया में थी तो मेरे दिमाग में वैसे था कि मुझे यूनिवर्सिटी से करना है. बट यहाँ पे आने के बाद तुम्हें पता चलता है एंड इन मेनी वीडियोस, राइट, लाइक कोई डिफरेंसेस नहीं होता है. हाँ, थोड़ा बहुत सिलेबस एंड ग्रेडिंग एंड स्ट्रिक्टनेस लेवल पे थोड़ा बहुत डिफरेंसेस है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इट डजंट मेक एनी डिफरेंसेस. ऑल दी तुम कहाँ से भी क्वालिफाई या ग्रेजुएट कर लो, लाइक प्रोफेशनल वर्ल्ड पे तो इतना मैटर नहीं करता है. बट बैक ऑफ दिस, बैक इन माइंड मुझे ये था कि मुझे यूनिवर्सिटी से करना. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देन आई थॉट ओके फाइन, लेट्स डू MBA itself, right, because like right now I have a good amount of rich experience, right. तो मुझे like somewhere around middle level management side में मुझे जाना था, उस मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन में मुझे ट्राई करना था. सो आई थॉट कि व्हाई नॉट डू MBA itself, right. Then I looked at the options of the colleges which was given to me by them, and then I thought okay fine, UCW का मैंने देखा, and then of course I did some research on the universities also. फिर मुझे कहीं ना कहीं मेरे बजट के हिसाब से सिटी के लाइक यू नो वैंकूवर में इतना स्नो होता भी नहीं है, राइट. सो there were several factors were there before considering this school. एक तो फीस का भी था, देन IELTS बैंड, एंड देन लोकेशन, सो एवरीथिंग. और मेरा इनटेक भी यहाँ इस कॉलेज में यू हैव 4 intakes, राइट. तो ये सब चीज़ें थी. तो दैट्स द रीज़न आई थॉट ओके फाइन, लेट मी अप्लाई टू द UCW. एंड वहाँ से द जर्नी स्टार्टेड. एंड देन लाइक उन्होंने मेरे बिहाफ में अप्लाई किया एंड मुझे हर 2 या 3 दिन में आई यूज टू गेट रिवर्ट फ्रॉम द कॉलेज, राइट, कि एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुआ है. एंड देन मुझे स्कॉलरशिप अमाउंट भी मिला गया था. तो ये सब चीज़ों की वजह से आई वाज सेटिस्फाइड, एंड आई वाज सेटिस्फाइड विद माई एजेंट ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने काफ़ी हर एक चीज़ें उन्होंने मेरे बिहाफ में जो अप्लाई किया, मुझे कोई कस्टमर सर्विस इश्यूज़ नहीं था, कोई भी इश्यूज़ नहीं था. दे टुक केयर ऑफ एवरीथिंग. मैंने SOP भी बनाया था, उन्होंने मुझे SOP का फॉर्मेट भी दिया था. तो SOP का भी मुझे इट वाज लाइक मैं बनाने के बावजूद भी उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया था कि यहाँ पे चेंज करो, वहाँ पे चेंज करो. एंड इट हैड वेंट थ्रू कपल ऑफ अप्रूवल प्रोसेस, एंड उसके बाद ही ये चीज़ हुआ. And then finally visa ka like somewhere I started this process somewhere in the month of June or July, and then August 20th in 2022 I had applied for my visa, and मुझे 45 days में मुझे almost 45 days में मुझे visa आ गया था, right. So this is what the background is throughout the whole process. एंड वीज़ा भी उन्होंने ही मेरा अप्लाई किया था. आई जस्ट मेड द पेमेंट, एंड या थ्रू आउट द प्रोसेस मुझे कहीं पे भी ग्लिच नहीं हुआ, कुछ भी कंसर्न्स नहीं हुआ, कुछ भी इश्यूज नहीं. एंड आई जस्ट वांटेड टू स्टेट वन थिंग, अगर आप बॉम्बे से हो, बॉम्बे या मुंबई से हो, तो लाइक जस्ट मुझे एक इशू था कि लाइक वीज़ा तुम प्रिंट जब भी तुम्हें प्रिंट करवाना होता है, तो जस्ट इंश्योर जब आप पासपोर्ट सबमिट करने जाते हो तो प्लीज़ आप पासपोर्ट यहाँ पे जाना
वर्ली वाले ऑफिस में जाना, नॉट इन बीकेसी ऑफिस। बीकेसी में भी वीएफएस का ऑफिस है, बट कनाडा रीजन्स के लिए वहाँ पे उन लोग प्रोसेस नहीं करते हैं, दे डू इट ओनली इन दी वर्ली। बस मेरा वो एक मिस्टेक हो गया था कि बिकॉज आई थिंक इट वॉजंट स्पेसिफाइड समवेयर, कुछ तो इशू था, इवन आई डोंट रिमेंबर, बट देन आई वेंट टू बीकेसी ऑफिस एंड आई हैड टू go through back to फिर all the way from BKC to Worli, and that was the whole day was mess। बस उसके अलावा और कोई concerns नहीं था मुझे। एंड VFS ऑफिस के सर्विस के लिए भी आई डोंट थिंक यू हैव टू अवेल प्रीमियम सर्विसेज, इतना कुछ डिफरेंस होता नहीं है, बिकॉज द प्रीमियम सर्विस जो है लाइक इट इज ऑन द हायर साइड, एंड आई डोंट थिंक इट्स वर्थ पेइंग दैट मच अमाउंट। सिर्फ आपको जाके पासपोर्ट सबमिट करना होता है, एंड पासपोर्ट तो आपके घर पे आ ही जाता है, इवन इफ यू डोंट अवेल द प्रीमियम सर्विसेज। तो आई थिंक दैट वे ऑल्सो आई वॉज लाइक pretty much I was all sorted out। But and guys, coming back to the fees part, the loan, of course I had opted for loan 20 lakhs कुछ मैंने लोन ऑप्ट किया था। तो लोन के लिए भी यूनिक्रेड्स करके एक है, फिर बाद में 2-3 इंस्टीट्यूशंस है जिस इंस्टीट्यूशंस के लिए मैंने अप्रोच किया था। तो आई वॉज वेरी स्केप्टिकल कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। द रीज़न बीइंग आई एम सेइंग दिस बिकॉज मेरा ऑलरेडी होम लोन चल रहा है। तो आई वॉज लाइक चलो मेरा ये प्रोसेस जो है UCW का एप्लीकेशन प्रोसेस, दिस वॉज गोइंग इन पैरेलल, राइट, बट देन I was very curious, not I was very curious, I was very skeptical and I was concerned कि मेरा लोन सैंक्शन होगा या नहीं होगा। The reason being I'm saying कि as I already told you मेरा होम लोन चल रहा था। तो meanwhile मैंने सारे जगह में अप्लाई करके रखा था, बट मुझे कहीं से भी इतना प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स आ नहीं रहा था। इवन रेस्पॉन्स आ भी रहा था तो इट वॉज लाइक लाइक होगा नहीं होगा, या फिर यू विल हैव टू mortgage, you'll have to mortgage something, maybe some of your current assets या properties, वैसे सीन था जो कि I was not purely comfortable about that, comfortable with mortgaging the property papers or anything, right? तो while exploring this process, that's how एक इंस्टीट्यूशन ने मुझे ICICI रेफर किया था। तो मुझे ICICI से कॉल आया, सो आई हैड टू ओपन एन अकाउंट इन ICICI एंड दे डिड माई होल प्रोसेस। बट वहाँ पे सिर्फ एक कैच था कि यू हैड टू लाइक पार्शली सिक्योर करना था। सो डिपेंडिंग ऑन द लोन अमाउंट यू हैड टू, मेरे को 6.5 lakhs समवेयर अराउंड मुझे FD डालना था। FD डालने के लिए उन्होंने मुझे कहा था, तो सिर्फ वो एक मुझे करना पड़ा, विच वॉज लाइक वो अमाउंट पार्शली मेरा ब्लॉक हो चुका था, एंड आई कांट यूज दैट अमाउंट अनटिल एंड अनलेस आई पे दिस 20 lakhs का लोन। सो दैट वॉज द ओनली ड्रॉबैक। वैसे ही ड्रॉबैक तो नहीं है, बट इट हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन एंड द सर्कमस्टांसेस, बट फॉरगेट अबाउट दैट पार्ट। बट दिस वॉज द प्रोसेस, लाइक इसके वजह से मुझे मेरा लोन भी ये हो गया था, लोन का पार्ट हो गया था, एंड आई हैड आस्क्ड, मेरा वहाँ पे RM था, तो आई हैड आस्क्ड दैट गाय माय RM टू पे माय फीस। फर्स्ट ईयर का फीस मैंने पे करने के लिए कहा था, दैट वाज लाइक अराउंड 3 सेमेस्टर का फीस, 3 सेमेस्टर का फीस मैंने पे करने के लिए कहा था। दैट वाज अराउंड 14 lakhs के आसपास चला गया था। लाइक यहाँ पे आई वुड सजेस्ट वन थिंग इज दैट जब आप इंडिया से फीस पे करते हो, राइट, so if it is more than 7 or 7.5 lakhs, you have to pay TDS, and of course that amount you can claim back when you're filing taxes for your returns in India, right, for your income in India। but अगर आपको वो चीज़ avoid करना है तो just check with the college if you guys have an option। I think मेरे हिसाब से तो option है, but उस time पे I wasn't aware of this thing, so मेरा कुछ 35 या 40,000 I had to pay TDS, right, तो मेरा extra चला गया था because I had paid around 14 lakhs in one shot। So just look into this point if you don't just check with the college
और मैंने काफ़ी पहले पे कर दिया था बिकॉज आई डेंट वांटेड टू बिकॉज पेमेंट आने के लिए भी 2 या 3 दिन, ऐसे बोलने के लिए तो बोलते हैं 2-3 दिन होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द इश्यूज और सर्कमस्टेंस कि कौन से बैंक से तुम ट्रांजैक्शंस कर रहे हो, राइट। मुझे तो लाइक आई थिंक 1.5 day में मेरा पेमेंट हो भी गया था, लाइक कॉलेज हैड रिसीव्ड एंड मुझे फिर लाइक पोर्टल में अपडेट भी हो गया था, एंड देन आई गॉट एन एक्नॉलेजमेंट कॉपी फ्रॉम द स्कूल इटसेल्फ की फीस पेमेंट हो गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फीस पार्ट। एनीथिंग एल्स, आई एम जस्ट थिंकिंग कि और कुछ मुझे आप लोगों को बताना है या लाइक थ्रू आउट दिस प्रोसेस, राइट। आई थिंक आई एम pretty much मेरा जो भी एक्सपीरियंस था मैंने फुल्ली ड्राफ्ट आउट कर तो दिया है, बट इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस जस्ट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मे बी आई कैन जस्ट help you out like help you out with whatever knowledge I have, right? And I'll just post it in the video, the list of the institutions to whom I approached. मैंने private banks as well as जो private जो NBFC institutions होते हैं ना, मैंने उन लोगों को भी अप्रोच किया था। बट जस्ट एक बात है, प्लीज जितना हो सके NBFCs को अप्रोच मत करो बिकॉज देयर इंटरेस्ट रेट्स इट्स एक्सपोनेंशियली हाई, बहुत ज़्यादा ये है, लाइक 13%, 14%, कुछ लोगों का तो 15% भी है। दैट्स टू मच, इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो प्लीज़ वो ऑप्शन चूज मत करना। आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि लाइक अगर मे बी हो सके तो आपका प्लान थोड़ा पोस्टपोन करके हैव सम सेविंग्स, या फिर अगर प्राइवेट बैंक से आपको मिलता है लाइक ICICI हो या फिर HDFC हो, ऐसे कुछ है तो वहाँ से कर लेना। एंड जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने HDFC में भी अप्लाई किया था बिकॉज मेरा होम लोन HDFC होम लोन से है, तो मैंने ये भी ऑप्शन ट्राई किया था कि मेरा होम लोन और एजुकेशन लोन मर्ज हो जाए एंड टॉप अप मिले या समथिंग लाइक दैट। मैंने वो भी ट्राई किया था बिकॉज एनीवे मेरा घर का मॉर्गेज पेपर्स तो बैंक के पास है, तो आई वॉज थिंकिंग दैट ऑल्सो, बट वो ऑप्शन भी हुआ नहीं। वो ऑप्शन एक्चुअली वहां तक बात आगे बढ़ी ही नहीं। द रीजन इज बिकॉज HDFC का मैंने जहां तक देखा है द प्रोसेस इज टू स्लो। द ओनली थिंग, नॉट ओनली थिंग, ICICI बाय दैट मीन्स मुझे ICICI का सर्विस काफ़ी बेटर लगा बिकॉज ICICI वॉज टू क्विक इन गिविंग मी दैट सर्विस एंड दे डिडंट वांटेड टू लेट दैट कस्टमर गो अवे फ्रॉम यू, राइट। बिकॉज जिस RM ने मुझे फ़ोन किया था, शी वॉज सो क्विक दैट उसने मेरा 2 दिन में उन्होंने मेरा 2 दिन में शी हैड प्रोसेस्ड माई एप्लीकेशन। लाइक वीकेंड पे उन्होंने मुझे बैठ के असिस्ट किया। शी वॉज एक्सटेंडिंग हर टाइम फॉर मी ऑन द वीकेंड्स एंड मेरा उन्होंने सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको सेंड कर दिया था, लाइक आधार हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो, लाइक योर मार्कशीट्स, योर एक्सपीरियंस, योर वर्किंग एक्सपीरियंस लेटर्स, सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने उनको सेंड किया था एंड शी हैड अपलोडेड इन द पोर्टल एंड इट वॉज वेरी क्विक, लाइक इन अ वीक्स टाइम मुझे लाइक अप्रूवल लेटर, लोन सैंक्शन लेटर मुझे आ गया था। सो दैट वाज रियल क्विक फॉर मी फॉर द ICICI। सो इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर एजुकेशन लोन, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप एक बार ICICI ट्राई कर लेना बिकॉज इन माई एक्सपीरियंस कुहू करके एक है जो कि लाइक इफ एनीवन इज वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम मुंबई, उनको पता होगा कुहू करके माटुंगा की एक जगह, माटुंगा इज अ प्लेस नेम on the central line of Mumbai and please don't approach them at all because उनका interest rate काफ़ी ज़्यादा high है and काफ़ी hidden charges भी है। तो मैंने प्रोसेस की थी, प्रोसेस मतलब लाइक आई हैड अप्लाइड एट सेवरल प्लेसेस बट मैंने उनसे प्रोसेस तो नहीं किया, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो गाइज। तो इन माई एक्सपीरियंस बैंक आई थिंक मैंने आपको लोन प्रोसेस जो था वो भी मैंने आई हैव एक्सप्लेन यू वेरी क्लियरली व्हाट वाज माय एक्सपीरियंस एंड कॉलेज सिलेक्शन पार्ट जो था इवन आई हैव एक्सप्लेन दैट थिंग पार्ट दैट ऑल्सो वेरी क्लियरली, राइट। या कमिंग बैक टू द पार्ट, लाइक मेरा होम लोन होने के बावजूद भी मैंने आई वॉज एबल टू डू दिस प्रोसेस इज जस्ट बिकॉज आई हैड सम अमाउंट ऑफ सेविंग्स
and that was the reason I was able to do it. And I stepped into this, as it's a very huge responsibility. I stepped into this, and then I was able to support myself. Of course, my parents were there throughout this process, and that was the reason that I could do this. But इसका मतलब ये नहीं है कि like I took support from my parents. No, it was whole and soul. I did it on my own. But yeah, of course, emotionally and mentally they were there with me together, and that's how I was able to do this. But yeah, life is completely different here. Whenever you guys are coming in, please ensure that कोई भी expectations लेकर मत आना. Life is completely different here throughout your study. जब तक आप study visa में हो, लाइक कंफर्ट जोन या फिर वट एवर, राइट, आपका जो बेसिक चीज़ें आप एक्सपेक्ट करते हो ना, शांति से बैठ के टीवी देखे या शांति से बैठ के खाना खाओ, ये कभी कभी ये भी है ना इम्पॉसिबल हो जाता है. या फिर लाइक यू नो दिमाग में, बिकॉज यही आपका चलता रहता है कि नो हाउ टू अर्न. So guys, that was all about it from my end. If you have any questions, post it in the comment section and I'll try to reply back in the comments, or I'll try to make a next video of it. And let me know if you have any suggestions. I'll come up with next video, and I'll see you in the next video. Bye bye, take care, and love you all. Bye bye.